नमस्कार आप सभी का। मैं हूं हर्षित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं OTTV। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सिमी फाउंडेशन है, जो कि चाइल्ड लेबर, लाइवलीहुड, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे बड़े बड़े वर्कों पर काम करती है। उनकी मदद करने का काफ़ी सारा काम करती है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन से हम मिलने ग्वालियर आए हैं, जिसका नाम है अवाना। तो चलिए अवाना के एक कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अवाना ने क्या क्या काम किए हैं और कैसे काम किए हैं। मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। Hello. Hi Harshit. This is Karki Shukla. I'm 21 years old. I'm from Gwalior and I joined this NGO about 2 to 3 years ago, and it's a fabulous institute to learn everything related to our social life and our uh, social values. It teaches about how we behave, and it's just a fabulous institute, I say. यस मैम, अब अपने एनजीओ का इंट्रोडक्शन दीजिए कि वो कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। All right, एनजीओ कैसे स्टार्ट हुआ या एंड कब फॉर्म हुआ? आवान एक पहल, इट्स माय एनजीओ नेम, and it was formed, actually it was started in the year 2014 with the objective to empower women and create a better future for the children. We pay special regard to those who differently abled and strive to transform their inability into a distinctive ability. Since we are not funded by any organ of the government, we raise our own funds through our active members and volunteers. Miss Ela Behl, she just started this NGO, and our main motive is that education is the chief defense of nations. Thus, we mostly focus on this Kyoto, and we mostly tie up on this. And we are significant change in the society. Can we want that significant changes are came to our society to provide at least minimum level of quality education with good opportunities. तो मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी एनजीओ क्या क्या काम करती है और कैसे काम करती है। ऑलराइट, क्या काम करते हैं? सिंस जब से हमने एनजीओ स्टार्ट किया, बेसिकली बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है, जस्ट लाइक ज्ञान, विच इज़ यूजुअली लाइक एजुकेशन पे डिपेंडेंट था. Like education is, as we know that education is a basic right, that no one should be denied of this right due to their economic status. So we mostly focus on this project about where we provide education to the uh, uh, those students who are not able to go to school. They not, मतलब जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, they are coming to poverty. So we basically focus on this project, and another project was Unnati, where we use that motto. I'll tell you that motto: where you educate a man, you educate a man, you educate a woman, you educate a generation. So in our this project, we basically focus on women education, where we empower the women. And as I said, that you educate a man, you educate a man, but when you educate a woman, you educate a generation. So basically in this project we focus on that. All right. And our another project was Srajan, where we follow another Kyoto, which was, it is the ability that matters, not the disability. I'll tell you in abbreviation, like differently abled person need our love and compassion, not our pity. We at Avan believe that if proper care is given, focus led on their strength and not on their weakness, their
the differently abled can excel in life. So we host workshops which are designed specially for these kids, keeping in mind their cognitive thinking pattern. We also run awareness campaigns on various disabilities. We create fun and interactive sessions, outdoor sports activities, keeping in mind their abilities. We also conduct activities for the visual impaired. मैम आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने इतने सालों तक काम किया तो आपको कैसा लगा अवाना के साथ काम करके? मुझे पर्सनली एनजीओ में काम करके काफ़ी अच्छा लगा. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस दैट आई एवर हैव इन माई लाइफ. सो आई एम ग्लैड टू वर्क देयर. आज की बातचीत हम यहीं ख़त्म करते हैं और इनसे आगे बातचीत करेंगे कि इन्हें क्या क्या चीज़ें मोटिवेट करती थी.